सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें ऑल, जिसके बाद आपको मिलेगी मेरे सारे नए वीडियो अपडेट्स की नोटिफिकेशन तुरंत। दोस्तों, इन दोनों स्पीकर के बीच साउंड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। मैंने इसे अपने पीसी से कनेक्ट किया है, दोनों स्पीकर को वाया ब्लूटूथ। पीसी से वॉल्यूम 100% है और जो प्लेयर मैं यूज कर रहा हूँ उस पर भी वॉल्यूम 100% है। उसके बाद मैं दोनों स्पीकर से साउंड कंट्रोल कम या ज़्यादा करूँगा। दोनों ही स्पीकर का स्टार्टिंग में मैंने 50% वॉल्यूम सेट किया है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 50%, वॉल्यूम 50%। वॉल्यूम 70%, वॉल्यूम 70%। Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times, so be strong. I've been waiting all my life. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times, so be strong. I've been waiting all my life.
वॉल्यूम 80%, वॉल्यूम 80%, Wait for me. Wait for me. तो देख सकते हैं दोनों स्पीकर की हालत ख़राब हो रही है 80% वॉल्यूम पे। यहाँ पे क्लियरिटी कम हो रही है, बेस भी कम हो रहा है और क्रैकिंग सी साउंड आ रही है। चलिए एक बार मैक्स करके देखते हैं कितना साउंड क्वालिटी लूज होता है। तो देख सकते हैं जितना ही आप लाउड जाओगे साउंड फ्लैट होता जाएगा। यहाँ पे बेस, ट्रेवल और वॉइस क्लियरिटी सब में कमी मिलेगी। तो ये स्पीकर को आप 30% से लेकर 70-75% तक ले जा सकते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको बस लाउडनेस मिलेगा पर मज़ा नहीं आएगी। तो चलिए फिर से चलते हैं 50% पे, कुछ और गाने प्ले करता हूँ। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. तो चलिए चलते हैं अभी स्वीट स्पॉट पे जो कि है 40% वॉल्यूम। I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. तो ये था मेरा साउंड कंपैरिजन इन दोनों स्पीकर के बीच। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, कुछ सॉन्ग्स में ये स्पीकर अच्छा है, कुछ सॉन्ग्स में ये स्पीकर अच्छा है। अब आप ही बताओ नीचे कमेंट में आपको कौन से स्पीकर का साउंड ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मैक्स वॉल्यूम पे जब हम जाते हैं तो दोनों ही स्पीकर यहाँ पे डेड होने लगते हैं, साउंड फ्लैट होने लगता है जैसा कि आपने देखा। तो बस यही था सारा कुछ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना यार। और अगर इन दोनों में से कोई भी स्पीकर ख़रीदना चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी ये है, ये नया है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा। तो बस चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल।
See you again. Bye bye.